So welcome back, Ms. Aruba. I'm sure I'm audible. Yes, sir. Well, Ms. Aruba, you have mentioned that John Keats is your favorite poet. That's very good. You know, John Keats gave, please listen my question carefully. John Keats gave the idea, the term negative capability. So where we are Yes, able to find negative capability in the writings of John Keats. sir. Um, sir, like when we find it in O2 Nightingale, there is a negative capability. He reaches to the stage of uncertainty, but then it No, was for a the very first time when we have this idea, where John yes, Keats mentioned this term negative capability. So where we are yes. able to find it out, because John Keats was writing poetry. So where exactly when John Keats coined the term negative capability? When he coined the term, sir. Yeah, when he coined the term negative capability. You know, he was inspired by a very famous writer. Wordsworth. All Sorry, right. not Wordsworth, Shakespeare. Sorry, sir, Shakespeare. Okay. And he said Accepted. that Shakespeare has a quality of actually he found that the Shakespeare works contain negative capability, and Okay. it All is right. in he says that he talks about the greatest writer, and he says that Fair enough. That's not the question, Aruba. I think that you are pushing aside the exact question. Do you know the exact coinage, the reason of the year of the coinage when John Keats, what he was doing? Was he writing the preface of a book? Was he writing the letters to someone when he coined this term? he was writing, I think, the letters To to his whom? cousin or Hmm. All right. Maybe you want to talk about George and Tom, who were the brothers of John Keats. yes, he wrote Okay. yes he was writing letters, and in that letters he mentioned that term. खुशबू खान सर आई कैन नॉट अच्छा जी ठीक है आई कैन नॉट रिकॉल द पॉइंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड ठीक है खुशबू आप इजी रहें आप बिल्कुल जब तक आप चाहें आप टाइम ले सकते हैं आप अगले 10 साल तक चाहें टाइम ले सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स रहिए इंटरव्यूज का क्या है ये तो हर साल होते रहते हैं आप रिलैक्स रहें कोई इशू नहीं है ओके सो आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली सो हम जो है वो कीट्स के ऊपर इनफ बात कर रहे थे नेगेटिव कैपेबिलिटी अप्लाई कैसे करेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या मतलब सादा लफ्जों में बता सकते हैं इसको जो है वो ये है क्या क्यों उसने नेगेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर बात की Sir, actually he says actually he talked about negative capability because he actually was criticizing Coleridge's views, Coleridge's highly philosophical views. Okay, have you read Ode to Nightingale? Sir, I have read it has been a long time when I read it. I can't do a discussion on it now. What is the name of the most famous? You have mentioned John Keats as your favorite poet. So what is the most famous ode of John Keats? The famous one, Hyperion Ode. Okay, sorry, you are asking about Ode. It is the Ode to Grishner. It is Ode to a Grishner. Are you sure about that? I think so, sir. It is. All right. Okay. When we talk about escapist, Yes, escapist is the term that we use for John Keats. Why specifically? What do you mean by escaping tendencies of John Keats? Actually,
he was ill, and his brother also died because of tuberculosis, and he tried to escape the sorrows of world, and he gets a room in poetry, but soon he realizes that it's not an appropriate way to escape. We cannot escape the reality. We are here in the world to suffer, and suffering are part of life. All right. What do you mean by a chameleon poet? What, You sir? know, chameleon poet. Chameleon poet. Can you please write the word, sir? Sure, I can. So, when we say John Keats was a chameleon poet, what do you mean by that? Uh, It's chameleon. Sir, I Chameleon. don't know. Okay, It's, all right. I think so, sir. Like he has the ability to he narrates in that way that it seems the whole thing is happening before us. Imagery is full use of imagery. Maybe you need to look once again. What is chameleon poet? Talking about your degrees title, is it Masters in English Literature or Linguistics or both? It is actually till sixth semester we read both. We have been taught both subjects, English and literature. But in the last 2 semesters, I opt literature. What is the definition of literature, Ms. Aruba? Sir, I think so. Everything is written form or in oral for didactic or aesthetic purpose is literature. All right. So you feel whatever is not didactic, so and whatever is not aesthetic, like more founders is not didactic one, like Tom Jones is not a didactic one, like these Lawrence novels are not didactic one. So that do not fall in the category of science. Ms. Aruba, I'm not getting anything from you. Sir, actually, I can't answer this question. No worries, you can skip the questions. Okay, just last two questions and then we are going to sum up the discussion. Why William Wordsworth and John Keats both are different, even they are part of the same movement, like the romantic movement. But when we read William Wordsworth and John Keats, a lot many differences are there. Can you pinpoint just 5 differences between John Keats and William Wordsworth? Yes, sir. Differences now. So the first difference is he talks about nature, whereas John Keats talk about beauty. Keats uses frequently uses Greek references in his poetry, whereas we don't find just poetry. And Keats is known for his negative capability, whereas Wordsworth's poetry is highly philosophical. And even Shelley says about Keats that he says that he does not like Keats. He says that he is a good poet just because of his way of saying, but he says that I don't like him because there is no revolutionary spirit in it. Okay? Whereas we find the little elements of revolution in Wordsworth poetry. Fair enough. The last question. Because you're from Lahore,
So can you name out any 7 buildings constructed by the kings, by the Mughals, maybe Lahore, that is still the order of the buildings that still exist there in Lahore, the ancient buildings? Jahangir's tomb, Noor Jahan's tomb, Badshahi Mosque, Lahore Fort, and there is Masjid Wadir Khan, and Shalimar Garden, and Baradari. Fair enough. Yeah, we're done with that. So thank you so much, Miss Aruba. It was a wonderful discussion. अब हम अपनी फॉर्मल डिस्कशन को जो है वो यहाँ पे खत्म करते हैं मिस अरूबा। दोनों चीजें हैं, शुड वी टॉक अबाउट द प्लस पॉइंट्स, या हमें जो है वो पहले उन पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए कि जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है? हम पहले प्लस पॉइंट्स की बात कर लें मिस अरूबा, या आप अपना माइक ओपन ही रख सकते हैं? Sir, as you wish. ओके, हम फिर अच्छे पॉइंट्स की पहले बात करते हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, इट साउंड्स अ प्रिपेयर्ड इंटरव्यू। आपकी ग्रिप ओवरऑल अच्छी थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक अच्छा इंप्रेशन होता है कि जब आप पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं और आपने अपना एक कंपोज वर्क भी आपके पास हो, और ओवरऑल जो है आपने दोनों के कंट्रास्ट को, कंपैरिजन को समझते हैं, आपको पता है कि कहाँ से किनको किस तरह से डील करना है। एक बैलेंस्ड इंटरव्यू था, आप नर्वस नहीं हुए, आपने अपने टोन को, एटीट्यूड को, आपने अंडर प्रेशर नहीं आए और आपने फेस किया इसको जो है वो बड़े आसान तरीके से, और आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को जो है वो आपने एक्यूरेटली आंसर किया। ठीक है, ये हमारे जो हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। अब हम जो है वो उन चीज़ों की बात करते हैं कि जिस पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ दिस डिस्कशन, यू वर प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डिटेल्स। आपने शायद इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन ये नहीं सुना कि यू नीड टू गिव अस ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जब आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है या आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, दोनों के अंदर जो है वो फर्क होगा। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग अरूबा, कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरफ जाना है। अगर ब्रीफ का वर्ड यूज किया गया है तो डेफिनेटली आपको उसको समझना होगा। आपका माइक वंस अगेन बंद हो गया है, दैट्स फाइन, बट आई एम गोइंग टू कमेंट, आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय कमेंट हियर। तो यहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। यू नीड टू लिसन द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। जो आपसे कहा जा रहा है आपने उसी को फोकस करना है। Second thing is that आपने किपलिंग्स की तरफ बात की, when you are talking about Rudyard Kipling, और आपने अपनी poems के अंदर भी उसका use किया, और but you are not able to even recite the first basic lines of the poem If by Rudyard Kipling। ठीक है, ये एक अच्छा impression नहीं होता है कि आपने जिससे आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पे आपने लिया, आपको उसके जो आपका मॉडल है आपको आप वो भी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ये एक इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक लूज हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब भी किसी एक राइटर का नाम लोगे, जिस तरह से न्यू क्लासिकल थे, जब वो ग्रीक रोमन की बात करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो फिर वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि उन्होंने सब का सब जो है वो राइम्ड कपलेट में लिखा। अपने ड्राइडन को पढ़ा, आपने पोप को पढ़ा, आपने देखा कि वो कैसे राइमिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शायद वर्कआउट करने की काफ़ी ज़रूरत है। हमें जब आप जो हैं यू आर नॉट एबल टू अप्लाई एंड फाइंड आउट द लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम द वेरी बेसिक लाइंस, जिसमें से आप अगर आप उन्हें दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप शायद जो है वो क्वेश्चन को सही तरह से यहाँ पे नहीं समझ सके, क्वेश्चन कुछ और था बट आपने एग्जैक्टली एक लेंथी आंसर जो है वो दिया था। तो देयर इज अ मिस कम्युनिकेशन। हम जो है इसको जो है वो शायद वर्क करने की ज़रूरत है कि इन एक्चुअल इंटरव्यू हम इस पे खसूसन तवज्जो देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन होगा हम उसे सुनेंगे, और अगर हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो हम नहीं आता है तो हम इधर उधर की बजाय टू द पॉइंट उसको कंक्लूड करेंगे। आपको शायद देखने की ज़रूरत पड़े कि और ऑन एग्रेशन अर्न है या और टू एग्रेशन अर्न है।
ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब आप टाइटल के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म करते हैं कि उसको गलत जो है वो प्रोनाउंसिएट करें या उसको नहीं समझ सकें। ओड टू अ नाइटिंगेल है या ओड ऑन ए ग्लेशियर रन है, इसको शायद आपको दोबारा देखने की जरूरत है। कैमेलियन पोएट के मतलब जो है वो देखिएगा, आपने कीट्स को बड़ी गहराई से समझा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कीट्स को। आई एम श्योर कि आपको जो है वो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और कीट्स के लेटर्स की बात कर रहे थे, तो कीट्स के लेटर्स जो हैं उसने अपने भाइयों को लिखे हुए थे, जॉर्ज और टॉम को, उन्हीं में उसने अपनी जो है वो फिलोसफीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड यस, ही वाज इंस्पायर्ड बाय विलियम शेक्सपियर एंड ही वाज राइटिंग ऑल द डिटेल्स, और वो बता रहा था अपने भाइयों को जो है वो ये डिटेल्स बता रहा था। ठीक है, तो आपको जो है ये समझने की ज़रूरत है कि इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब भी आप फोकस करेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे, जब आप ढंग से इनको प्रिपेयर करेंगे, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, और इनको आपको जो है वो ढंग से देखने देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो हमारे पास जो है कैमिलियन पोएट, बाय द वे उसको कहा जाता है कि whenever you're talking about the criticism, so a person who's invoking a lot many things, एक ऐसा पर्सन who's writing something और वो कीट्स के मुतालिक जो है वो चीज़ों को अज्यूम करता है। और इसी तरह से कीट्स जो है, जब आप कीट्स के मुतालिक देखते हो, जब आप कीट्स को पढ़ते हो, तो कीट्स बार बार जो है वो ग्रीक रेफरेंसेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, सो a lot many things are there जो रेफरेंसेस को बार बार इन्वोक करता है। हम सादा लफ्जों में कह सकते हैं कि वो कीट्स की जो है वो ट्रेडिशन को फॉलो करता है। जो इंटरव्यू वाज अ गुड इंटरव्यू, आपने अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हम अगर इन्हें मेजर मिस्टेक्स हैं वो इन्हें निकाल दें, सो विद दिस प्रिपरेशन हम जो हैं 66 तक जो है वो पहुंच जाते हैं, 66 67 तक। बट हम शायद इससे ऊपर जो है वो आसानी से जा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा और हार्ड वर्क करें तो। ठीक है मिस अरूबा? Okay, sir. Thank you so much. Actually, I was not prepared today for an interview. No worries. I'm sure that next time you will cope all the questions very carefully and you will try to answer them. Okay, sir. Thank you so much, Mr. Uba. I'm muting your mic. At the end of the discussion, participants, in our next session, we are going to cover all the questions exactly from the younger romantics. And here, when I'm talking about the younger romantics, I mean Byron, Shelley, and Keats. Moreover, we are going to talk about the Victorian age as well. So हम ultimately अपनी classes जो हैं उनको हमारी कोशिश है कि इस तरह से करें आपके के सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, आपको इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। सो टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह। वो इंटरव्यू होगा हमारे पास है, मैं नाम अभी बता देता हूँ ताकि अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को। एक इंटरव्यू सर होगा मिस उज़मा का। सो मिस उज़मा अपना इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और हम जो है वो क्वेश्चंस को 30 मिनट्स डिस्कस करेंगे। So thank you so much everyone. It was a wonderful discussion with all of you. Hope to see all of you tomorrow. खुदा हाफिज़।